आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 27 कर रहे हैं। ये 10 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमें आयनिक कंपाउंड्स और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds are the compounds made up of ions. These ions are atoms that gain or lose electrons, giving them a net positive or negative charge. Metals tend to lose electrons, so they become cations and have a net positive charge. Non-metals tend to gain electrons, forming anions that have a net negative charge. आयनिक कंपाउंड मेटल्स और नॉन मेटल्स से बनते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्योंकि मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसलिए मेटल के पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जब मेटल और नॉन मेटल इस तरह से चार्जेस गेन करते हैं तो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। In other words, ionic compounds are held together by ionic bonds. Elements can gain or lose electrons in order to attain their nearest noble gas configuration. ऐसा करने से एटम्स के पास में नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। Formation of ions for the completion of octet helps them gain stability. In a reaction between metals and non-metals, metals generally lose electrons to complete their octet and non-metals gain electrons to complete their octet. Metals and non-metals generally react to form ionic compounds. जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मेटल्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देती हैं और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और नॉन मेटल्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। Formation of ionic compounds. Ionic compounds are also known as electrovalent compounds. The chemical bond formed by the transfer of electron from one atom to another is known as ionic bond. These compounds contain ions. Compounds को electrovalent compound भी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। वन एटम विल लूज द इलेक्ट्रॉन, अनदर एटम विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड thus द आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है सोडियम क्लोराइड का। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl. Sodium atom is losing one electron as its configuration is 2, 8, 1. So it will lose one electron and thus it will acquire one positive charge over it. Chlorine atom, its configuration is 2, 8, 7 as its atomic number is 17. So it will gain one electron and complete its octet. Now it will become Cl negative and last shell will be completely filled. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और इसीलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सोडियम के पास यहाँ 2 शेल्स हैं और क्लोरीन के पास यहाँ 3 शेल्स हैं एंड दीज शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सोडियम इज गिविंग इलेक्ट्रॉन सो इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज गेनिंग दिस इलेक्ट्रॉन टू गिव chloride ion. Sodium has been converted to the sodium cation. Formation of magnesium chloride. Magnesium has the atomic number of 12, so its configuration will be 2, 8, 2. It can lose its 2 electron to empty this shell. Chlorine can gain the electrons to complete its octet. 2 chlorine atoms will gain one each electron from magnesium. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ मैग्नीशियम के K शेल में 2, L में 8 और मैग्नीशियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा। इसके कारण मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज आ जाएगा और दोनों क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बनाकर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। मैग्नीशियम कटायन एंड क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इन इट। लेट अस प्रैक्टिस नाउ।
What are anions and cations? How are these anions and cations formed? Anions are formed by gaining electron. So here chloride is an anion. Cations are formed by losing electrons. So sodium or magnesium, they form cations. How are ionic bonds formed? Ionic bonds are formed by the transfer of electron from one atom to another. Why atoms tend to gain or lose electron? Atoms tend to gain or lose electron to complete their octet and to attain their nearest noble gas configuration. Justify the statement, is calcium oxide an ionic compound? Calcium oxide is an ionic compound. Calcium is giving its two electrons to oxygen atom so that oxygen can complete its octet. After gaining these two electrons, explain the formation of sodium chloride by the transfer of electron. Sodium atom is giving one electron and chlorine atom is gaining this electron. After this, sodium will get converted to the sodium cation and chlorine will get converted to chloride ion or anion. Thus, formation of NaCl takes place. आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।